Hopes of finding more than 180 missing people alive are waning in southern India. This as rescue workers search through mud and debris for a third day after a landslide set off by torrential rains killed at least 194 people. A Kerala state official said rescue work continues to be challenging as more rain fell today. Some of the victims have been found downriver, some 20 miles from the area where the main landslides occurred. Local media reported most of the victims were tea estate workers. More than 5,500 people have been rescued, with some 1,100 rescue personnel, helicopters, and heavy equipment involved. अभी जो हमें सूचना मिली है तकरीबन 200 से ज़्यादा डेथ्स वहाँ पर हो गई हैं, बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हैं। पहले दिन तकरीबन 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, लाइव रेस्क्यू। और आज का जो सिचुएशन है उसमें कल री अलाइनमेंट किया गया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जो साइट्स का, और उसमें अभी जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पर मकान थे, बड़े मकान, उन जगहों पर खोज हो रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग दबे हुए हैं उनकी डेड बॉडीज़ निकाली जा सके। We, as of now, are on the third day of the operation which we have launched. Almost all people who are trapped and needed rescue have been rescued. Now we need to get into the houses and see if there are any people who are trapped inside the houses whom we cannot find. For that we need heavy equipment. Our bridge is nearing completion at 10 o'clock today, and once the bridge comes up, it will be a major change. We will be able to induct all equipment into the site, and once the equipment goes into the site, then we will be able to dig for people. ഏറ്റവും മാനസികാഘാതമാണ് അത്, പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിനെല്ലാം അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമായത്ര കൗൺസിലിംഗ് അവർക്ക് നൽകണം തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്.